तरफ हर जगह हर कहीं पे है, हाँ उसी का लो। Today is an auspicious day for the first College of Nursing in Bihar. This college at Indira Gandhi Institute of Medical Sciences, which also houses the State Nodal Center of Excellence for Nursing Education, is conducting its first 6 weeks training for the nursing faculty of the state. Important dignitaries from the state's health department have come for the inauguration as a mark of the government's support for this important initiative. This State Nodal Center is not just a model teaching institution, but also serves as a pedagogic resource center and supports the strengthening of nursing education at the auxiliary nurse midwifery and general nurse midwifery schools in the state, also called A&M and GNM schools. And not just in Patna, the state government, through the State Health Society, is making concerted efforts to strengthen nursing education throughout the state, including all the A&M and GNM schools. The future of nursing seems bright for the state of Bihar. But things were not always such. You must know that for almost a decade, nursing schools in Bihar had been shut down completely neglected. So infrastructure-wise, attitude-wise, then motivation level, the condition was very, very bad. The government, both at the national and state level, realized that the nursing cadre was a key pillar in developing a strong healthcare delivery system, and it could not be ignored any longer. I really sat down and tried to analyze reasons, for why we are not really able to make accelerated progress on some of our key goals. It was very obvious that your nurses, for instance, our auxiliary nurse midwives and our staff nurses really are not empowered enough. Though they are the workers or service providers who actually are doing a lot of maternal and child health related work on the ground. We feel that in the health department, A&Ms and nurses occupy a position of prominence, and their position and the kind of services they are providing is crucial for effective delivery of healthcare services, especially the primary care services. There is pre-service training and there is post-service training. So we've been doing some things under post-service training, but we felt that if the pre-service training can be strengthened, then a lot of problems which we face later would be solved. We found that their infrastructure needs improvement, fair amount of vacancies of tutors there, and a better educational and staying environment needs to be created there. So in the process, with the help of GOI and the state government, especially under NRHM, we did a resource mapping of all our schools. We identified the kind of critical physical infrastructure gaps. The government moved quickly and took many critical and strategic steps to revive the condition of nursing in Bihar. With support from the Norway-India Partnership Initiative, Jhpiego provided the technical assistance and introduced its standards-based management and recognition model, a practical management approach for improving the performance and quality of health services. In 2009, Jhpiego started working with Indian Nursing Council and the Government of India to strengthen the pre-service nursing and midwifery education, and we developed a strategy with them. The goal of the strategy was to strengthen the foundation of A&M GNM education, resulting in better prepared service provider, institutions which were functioning well, and then producing students who were equipped to provide the care in the facility or at the primary level. Jhpiego was identified as a technical partner for this initiative. Jhpiego की टीम थी, हर डिस्ट्रिक्ट स्कूलों में वो जाते थे और एक स्कूल में वो जा कर के स्कोरिंग देखते थे हर एक चीज़ों का, कि क्लासरूम की कंडीशन क्या है, टीचर्स कैसे हैं, पढ़ाने की उनकी जो क्लास लेते हैं तो उनका स्पीच कैसा होता है, वॉइस बच्चों तक पहुंचता है कि नहीं, स्कूल में ब्लैक बोर्ड कैसा है, लाइटिंग कैसी है। उसी तरह फिर क्लिनिकल में देखते थे कि लेबर रूम कैसे हैं, कम्युनिटी विजिट होती है कि नहीं, उनका जो जो उनका हॉस्टल था, हॉस्टल की कंडीशन क्या है, स्टूडेंट्स कैसे रहते हैं,
उनका लिविंग कंडीशन क्या है। तो वो जपाइगो की पूरी टीम को उसमें लगी कि इन कमियों को हम दूर करना शुरू करेंगे। Early in this process, the state realized the need to have its own college of nursing, which could impart higher level education to the nursing students to enable them to become tutors. This was a fact that Bihar had no nursing college. And when Jhpiego stepped into it, it was actually a dual thing that we are doing, setting up the first nursing college and making into a nodal center, that is a center of excellence. With this started the upgradation of the School of Nursing, which had existed within the Medical College at IGIMS, to a College of Nursing at the new campus at Jhpiego. It wasn't just a shift to a new campus, it was a transformational change in several other ways as well. Many of these changes were intangible, yet invaluable. It ignited hope and aspiration in a disillusioned faculty. The very same people responsible for training the future generations of nurses. मुझको यही लगता था कि शायद मेरे रिटायरमेंट के बाद या नज़दीक आते आते शायद ये स्कूल ऑफ नर्सिंग बंद हो जाएगा। मैंने कभी ये सोचा नहीं था कि मुझको ये समय देखने के लिए मिलेगा कि हमारे पास हमारे नर्सिंग स्कूल में मतलब नर्सिंग कॉलेज खुल जाएगा, नोडल सेंटर खुलेगा और साथ ही साथ स्टूडेंट्स को इतनी सुविधाएं मिल जाएंगी कि उनका जो एजुकेशन का लेवल है वो काफ़ी हद तक बढ़ जाएगा। मैम पहले तो उधर वाले हॉस्टल में रहते थे जिसमें बहुत प्रॉब्लम ज़्यादा आती थी। इसमें तो बहुत ही अच्छा है ये। पहले वाले में था कि हॉस्टल में कंजेस्टेड रूम था, उतना ज़्यादा फैसिलिटी नहीं था कुछ भी, और यहाँ उससे बेटर है। क्लासरूम्स नहीं थे और टीचर का भी प्रॉब्लम था, 1 या 2 टीचर होते थे। यहाँ सारे सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर होते हैं। इसमें लाइब्रेरी भी यहाँ पहले नहीं था। लाइब्रेरी आ जाने से हम लोग को ज़्यादा इधर उधर परेशानी नहीं होती है। कंप्यूटर लैब्स भी नहीं था मैम, तो जो सर्च करना होता है, रिसर्च टॉपिक है वो रिसर्च कर रहे हैं। And not just the students, even the tutors have started feeling a sense of belonging. पहले कैंपस नहीं था, अब हमारा अपना एक घर है जिसमें हम बहुत शान से घुसते हैं सुबह सुबह और शाम में निकलते हैं, लेकिन कहने को है कि हमारा ये बिल्डिंग है। तो ये जो हमारा वर्ड है पहले नहीं था, पहले वो मेडिकल कॉलेज का था तो अच्छा नहीं लगता था, अब हमारा है। तो ये जब हमारा वर्ड आता है तो ऑटोमेटिकली बहुत अच्छा लगता है। To build the skill and competence of nursing students to deliver the healthcare services to the community after graduation, the State Health Society adopted the INC prescribed competency-based training. 2 critical components ensured competency-based learning. One was the setting up of skill labs, where students could practice essential maternal and neonatal care procedures using humanistic anatomical models. And the other was ensuring that the students get sufficient clinical practice in labor rooms and regularly go for community visits to develop the skills to identify health problems and to learn to interact with the community. Health is hands-on experience. So we decided that all our A&M and GNM schools will have a skill lab of their own. स्किल लैब के अंदर पहले A&M स्कूल में हम देखते थे कि जो लैब हुआ करते थे वो केवल खाना पूर्ति के लिए होती थी, कि लैब में कुछ गिनती के मॉडल पुराने छोने कहीं से भी कलेक्ट किया, कहीं से भी इकट्ठा किया, कहाँ से मिला, कहीं से मिला और उसको रख दिया जाता था। लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि A&M स्कूलों में मैसिवली बहुत सारे A&M स्कूल में एक साथ स्किल लैब्स का इंस्टॉलेशन किया जा रहा है। उसमें एज़ पर द स्टैंडर्ड्स ऑफ INC गाइडलाइंस एंड एज़ पर द SB स्टैंडर्ड्स बहुत स्टैंडर्ड वे में जो अच्छे मॉडल्स हैं उनको वहाँ पे रखा जा रहा है, उनको इंस्टॉल किया जा रहा है। जो ट्रेनिंग की फैसिलिटी बड़े दिल्ली के कॉलेजेस में या प्राइवेट अच्छे स्कूलों में मिलता था, वही फैसिलिटी आज बिहार के A&M स्कूलों में गवर्नमेंट के मतलब स्टूडेंट्स को आज वो फैसिलिटी अपने ही स्कूल में मिलने जा रहा है। कम्युनिटी में 1,20,000 रुपीज़ जो है पर ईयर आता है। उससे क्या फ़ायदा हुआ कि लड़की को मैं कम्युनिटी में अकॉर्डिंग टू सिलेबस उन सब जगहों में ले जाके लड़की को मैं कम्युनिटी विजिट करवाती हूँ। वहाँ हमारा हेल्थ एजुकेशन दिलाने में लड़की को बहुत ट्रेंड करने में फ़ायदा होता है। 5,000 पर मंथ हम लोग को मिलने लगा है। एज ए प्रिंसिपल को डिसबर्सिंग बनाया गया। 5,000 पर मंथ वो अपने बच्चों में अपने स्कूल की छोटी काम में वो लगा सकती है। तो उससे हुआ कि मेरा बहुत ज़्यादा छोटा काम होने लगा, जैसे फ़ोटो स्टेट वगैरह हुआ या कंप्यूटर का इंक हुआ, कुछ भी वो मैं आराम से कर लेती हूँ। छोटी मोटी नल टूट गई या बल्ब नहीं है वो सब मैं उससे कर लेती हूँ। ये बहुत एक अच्छी बात हुई।
क्लास तो हम लोग पहले भी लेते थे, सारी टीचर्स लेती थी, लेकिन इसमें चेंजिंग क्या आया कि अब जब भी क्लास लेने हमारी टीचर जाती है तो वो लेसन प्लान को लेके जाती है। कि लाइब्रेरी के नाम पर सिर्फ एक अलमीरा में बहुत सी पुरानी कुछ बुक्स थी। अभी 2 साल में हमारे लाइब्रेरी में सारे टेक्स्ट बुक आ गई हैं, सारे सिस्टमेटिक ढंग से आ गई हैं। कैटलॉगिंग क्या होता है वो सिस्टम मैं जानी, इन बीच में कैटलॉगिंग करी, वो सब सारा सेटअप हमने नया करी इस 2 साल में। सो लाइब्रेरी मेरा बहुत अप टू डेट हुआ। अभी 760 बुक्स मेरे पास है जो सारे नए एडिशन है। लेकिन अभी यहाँ सारा है, हम लोग को थ्योरी पढ़ने के बाद चेकलिस्ट के द्वारा हम लोग को डेमोन्स्ट्रेशन मैम लोग दिखाती हैं, फिर उसके बाद हम लोग भी रीडेमोन्स्ट्रेशन करते हैं। उसके बाद हम लोग क्लिनिकल एरिया में जाते हैं जिससे कि प्रैक्टिकल अच्छे तरीके से कर पाते हैं। यहाँ जो देख लेते हैं तो फिर वहाँ कोई दिक्कत नहीं आती है। While a concerted effort was being made to uplift the standard of nursing education in Bihar, the lack of qualified teachers was increasingly becoming evident. The state needed to address the acute shortage of trained teaching faculty and do so urgently. They came up with an innovative solution. Good teachers are in short supply because we are facing shortage of manpower. In due course of time, probably we'll be able to solve it, but until then that happens, we need to be able to take care of this. And I think that is the moment we got the idea that if we can set up a virtual interactive class at the nodal center and link up our A&M and the GNM schools with it. Technology is already available and we felt that available technology should be leveraged for imparting better education. We requested the DFID people to give us technical support. They were more than happy to come on board. If you're using technology, then you also need to develop courses. हमारे यहाँ टीचर्स की कमी है, बहुत सब्जेक्ट्स के, कहीं गायनी के हमारे नर्सिंग ट्यूटर्स नहीं हैं, कहीं पीडियाट्रिक्स के नहीं हैं। तो उन सब्जेक्ट में 72 आवर्स का एक जपाइगो ने हमें कॉम्प्रिहेंसिव बना करके दिया उसका ये पैकेज करिकुलम का कि सर 72 आवर्स में हम एक पूरे पैकेज को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसी बेस्ड पर हम लोगों ने पूरे स्टूडेंट्स को उस पैकेज के अंदर हम लोग उसको पढ़ा रहे हैं और हमारी वर्चुअल क्लासेस भी शुरू हो गई हैं। The main instructor location is at this nursing state nodal center and the other one is in Kolkata National Nodal Center, and we have connected 7 schools, 3 GNM and 4 A&M schools initially. Multiple partnerships forged under the leadership and administrative oversight of the government of Bihar have made this possible. With support from the Department for International Development, Government of United Kingdom, Cisco provided the latest technology and hardware, and Jhpiego developed the training content, methodology, providing on-site technical assistance and ensuring quality at the sites connected via virtual technology. So we thought that if you can link this center with our A&M and GNM schools, then key resource persons can come to the nodal center, give central lectures, show people how to operate the mannequins, how to operate the skill lab, what are the things which we can learn in skill lab, and share it with people who are across. इस टेक्नोलॉजी से विश्वास ही नहीं होता कि हम लोग वहीं बैठे बैठे दूर बैठे हुए टीचर से, एक्सपर्ट से हम लोग ट्रेनिंग ले रहे हैं। इवन ट्रेनिंग हमारा भी हो रहा है, टीचर्स का भी हो रहा है, हमारे स्टूडेंट्स का भी हो रहा है। वर्चुअल के आने से वो क्लास और ज़्यादा इंटरेस्टिंग वे में हो गया कि सामने जब वो आते तो उनको ऐसा कि हम सिनेमा हॉल में आ गए हों, तो उनका इंटरेस्ट नहीं जगता कि कोई भी स्टूडेंट अपने हॉस्टल में बैठना या सोना नहीं चाहती है। जब भी वर्चुअल का ट्रेनिंग होता है तो उसमें वहाँ आना चाहती है, उसमें पार्टिसिपेट करना चाहती है और उसको छोड़ना नहीं चाहती है। तो इसका बहुत बड़ा फ़ायदा। वर्चुअल क्लासेस से भी हम लोग बहुत कुछ सीख रहे हैं कि कैसे मतलब मैनेजमेंट करना चाहिए, कैसे कम्युनिटी में हम लोग किसी महिला के साथ हेल्प करेंगे, क्या कैसे करना है, सब कुछ उसमें बताया जा रहा है। नॉर्मल डिलीवरी के बारे में पूरा हम सीख गए हैं, उससे मतलब अब अच्छे से हम करवा सकते हैं नॉर्मल डिलीवरी। एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ 3rd स्टेज भी अब अच्छे से क्लियर हो गया है कि किस तरह उसका मैनेजमेंट करके मतलब प्लासेंटा वगैरह को कैसे निकाल के महिला को किस तरह रखना चाहिए, पूरी तरह सब क्लियर हो गया। हमारा जो वर्चुअल क्लास चलनी शुरू हो गई है उसमें क्या होता है, जो मेरे पास लेख है वो दूसरे स्कूल से मुझे मिल रही है, उनके पास अगर कोई टॉपिक लिख कर गया तो वो मैं उनको दे रही हूँ। सो एक दूसरे में जो ये वर्चुअल के द्वारा क्लास के द्वारा जो हम लोग पढ़ाई करवा रहे हैं या कर रहे हैं वो बहुत अच्छी बात हुई। वर्चुअल क्लास अटेंड किए थे, बहुत इंटरेस्टिंग था मैम। एक होता है हम लोग अकेले क्लास में अपने ही बैच में पढ़े, लेकिन वर्चुअल क्लास में हम लोग अदर जगह जैसे PMCH
NMCH फिर मुजफ्फरपुर, ये सब सारे स्टूडेंट्स के बीच में पढ़ना एक अलग ही मतलब कि खुशी की बात थी मैम। 8 additional A&M and GNM schools are being connected in the second phase of this project. Post that, plans are on to connect all the A&M and GNM schools in the state via virtual technology. I hope that very quickly we cover and saturate and cover all our schools with it, and we need to do it quickly. And I must say that the kind of reviews this program has been getting, especially in other states, people are very excited about it. They are talking about it, and I'm very happy that we have started something in Bihar, which has caught the attention everywhere, and other states are also coming on board and wanting to do similar things. हम गया जिला टिकारी थाना और मूसी गांव से आए हैं। वहाँ पे ज़्यादा हेल्थ का उतना प्रोग्रेस नहीं है। हम चाहते हैं कि हम पढ़ लिख करके कुछ इस तरह बन जाएं कि हम अपने गांव को इस तरह हेल्थ के लिए प्रोटेक्ट कर सकें। इस ट्रेनिंग से मैं काफ़ी सीख रही हूँ, आगे चल कर के काफ़ी महिलाओं की सेवा कर सकूँगी। हम लोग जिस उद्देश्य से यहाँ पर आए हैं, हमको लगता है कि 2 साल के बाद हम लोग पूर्ण रूप से एक A&M का कार्य कर सकते हैं। हम तो सिर्फ पूरा डिस्ट्रिक्ट से आए हैं मैम, वैसा कुछ नहीं, अभी डेवलप नहीं किया है उतना, लेकिन फिर भी हम वहाँ जाएंगे तो अच्छे ढंग से काम करेंगे। मेरे वहाँ जाने से बहुत वक्त खुश हो जाएंगे काम करने से, ऐसा हमको अपने आप पे प्राउड है।